National Survey Day, let us all remember some of the great Indian explorers and तो चलिए आज नेशनल सर्वे डे के अवसर पर हम याद करते हैं उन भारतीय एक्सप्लोरर्स व मैथमेटिशियंस को जिन्होंने अपनी प्रतिभा व बुद्धि के बल पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपने नाम दर्ज करवाए। आइए इनका जीवन दर्शन कर हम भी इनसे प्रेरणा लें। And Survey of India has a big role in its implementation. Jai Hind. Today I am exceedingly happy. The aim today is to remember our history, legacy, past, heritage of Survey of India. 10th April, 220 years, and we are here for the National Survey Day. Today I am deeply happy that we thought to remember our पूर्वज जिन्होंने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया, and today also to remember the unknown soldiers, unknown surveyor, unknown explorer, unknown adventurer who dared to cross the crest, go other side and find out for us what is it all about. In fact, today is the day of gratitude to those, the big ones, जो हमारे पूर्वज थे, जो पंडित नैन सिंह रावत जी, जो सिकदर साहब, जो कृष्ण जी, जो किंथुप साहब, उनको याद करने का. And apart from that, today is a very auspicious day too. And मेरी रामनवमी पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. I don't know when I'm looking at this parivar, this family, I'm seeing all blue, shirts also blue, seats also blue. I think you have a relationship to cross the crests and go over across the horizon. I think that's the reason that you decided to have so much of blue in it. I'm very happy that our so tall surveyor of India is tall in his achievements too. And I'm so happy to note in what he said that we have decided to transform, we have decided to modernize, we have decided to target absolute, that millimeter resolution. That's the way we are looking at the entire job of surveying. I think today is a great day to remember GTS, the Great Trigonometric Survey. In fact, जो भगवान शिव का एक त्रिशूल होता है और जो ट्रायंगल की 3 कोण होते हैं वो भी एक जैसी ही होते हैं. ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल, ट्रांसेक्ट, एंड देन 3 सच्चाइयों को, 3 लाइनों को जो जोड़कर अपनी पोजीशन जो जानने का एक प्रोसेस है, उसी ने ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे का नींव रखी हो. And today is the day 1802, 220 years. I think the basics, fundamentals and the principles of that trigonometrical, that excellence has brought us to this moment where earlier we used to say a corridor, a mountain range, Himalaya, and we have gone to the time when we are targeting millimeter, when we are targeting virtual reality, augmented reality, and a line. The entire perspective of border state, border, line of actual control
And now we come on to the lines. I think we need to dedicate all that knowledge we picked up about the survey to this luminaries that we have. I think it will be also very important to remember Major William Lamington, who started this great trigonometric survey. I would say that all those who are in the game of survey, they are the warriors, they are the bravest. They have the courage of crossing forests, rivers, mountain ranges and explore. They don't know what will they meet in the pursuit. Animals, challenges, weather, vagaries, terrain, difficulty. But they do it for us. In fact, if you go into the details of these four ancestors of ours in the survey game, they were made, I think, if you look at the Kinthup, Lama lecturer from Sikkim, he was made a slave for 3 years. He fought but never gave up the pursuit of the survey. You must study them deeply. I think at the moment the nation is collectively talking about Amrut Mahotsav. We are remembering our ancestors. In fact, what Pundit Nain Rawat ji did, and वो तो हमारे प्रदेश मुंसियारी के, उनके बारे में तो हमको जानना सबसे जरूरी है. उनसे हमने सब सीखा. उनकी जो दृढ़ता थी, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, उनका एक डेडिकेशन जो था, और उस वक्त में टेक्नोलॉजी नहीं थी, हिम्मत थी, एक कुछ करने का एक जो जद्दोजहद था, वो एकदम अलग था. I think for me, they were the biggest warriors. If they were not on the path which they were, we wouldn't have been able to dream of our millimeter resolution today. In fact, I would say the centrality is all about the desire to measure. And it started off desire to measure the great arc from Cape Cameron to Bangalore. I think what aspirations they had, what vision they had, what vision they had at that time, we got to remember and with reverence remember our past, our heroes, our icons. And today, Survey of India has got 2.5 centuries of experience in the map preparation. I think that's a great wealth that we got with us. In fact, when one talks about the baseline, way back in the 80s, and the first observatory which came at Madras, it extended to further north the Himalayas to our place, to our home, हमारी मातृभूमि में. And I was very touched to find out that they took that baseline up on to Berock, Missouri Hills, the very place that we are standing in. And maps is not an easy thing. Map has got, I think, the different scales, the variety of terrains, and you know, I was fortunate, I was the director, Military Operation 1, dealing with China. So I used to have a lot of interaction with MOGS, who deal with the maps from a military perspective. In fact, I have a deep respect for them. How to bring from little information to precise information is the challenge that they got. And in fact, as we go further into LAC and the border talks with China, I think Survey of India is a centrality which will tell us, put us right on what is our. As a nation, it's very important to know what is our. And in that domain, the geospatial specialty that you've got, I think that is what is more important. The 15,000 kilometers of the border
7,500 kilometers of the coastal line and a great EEZ that we got. And what we are basing it on the tidal and aerial survey. And I'm very happy Admiral Pathania is here today with us. And it is, I think, a comprehensive, consolidated look at the entire perspective, which makes us strong. First, you got to know what you have. And in that pursuit, Survey of India has played super pro. And my compliments to each one of you. When I look at the basics and the fundamentals, I find like the words which Sunilji had used, geodetic, geodesy. In fact, to me, life is all about latitude, longitude, and gravitational determinants. That would make us go towards the higher reaches of surveying and mapping. And the superb network that he got, and I'm happy he didn't say only India, he said the entire region. In fact, we have the responsibility as Indians, as a wish group, to look at the entire planet. We have to take that responsibility on us. In fact, I would say that 18 geospatial divisions, 23 geospatial data centers, this tides and aerial survey, cartography and surveyors pursuit which you got is going to absolutely give us a lead in the entire world on this issue. आज का दिन, I'm personally very happy that the 5th generation of Pundit Nain Rawat ji is here. In fact, I'm feeling very touched. I'm feeling very great. I'm feeling very deep. I feel God is kind that He's given us a depth. वो गहराई दी है कि 5 जनरेशन पहले जिन महान शख्सियत ने, जिन योद्धा ने सर्वे ऑफ इंडिया के उस दौर में इतना बड़ा काम किया, आज हम उनको याद कर रहे हैं. This is a great sense of gratitude, and I compliment Mr. Sunil and the entire team of Survey of India who had given respect to Pandit Nain Rawat ji. In fact, I would say that he clarified for us, he made us known what was unknown. He went into inhospitable regions. He explored the trade routes for us. He explored the Himalayas for us. He had the courage to cross those mountains. In fact, he was the first to know the location and the height of Lhasa. तिब्बत को, लासा को, चाइना को नैन सिंह रावत जी का नमस्कार प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले दुनिया को लोकेशन और हाइट बताई लासा की. नैन सिंह जी ने सांको को मैपिंग किया, जो सांको नदी है तिब्बत के अंदर में, और वो कहाँ के थे? वो हमारे घर में मुंशियारी में पैदा हुए. तो ये हमारा क्रम बनता है कि इस बात को हम पूरे दुनिया, पूरे विश्व में बताएं कि हमारे परिवार के पूर्वज ने ये कार्य किया था. He was explorer, surveyor, geographer, and उनकी जो डायरीज लिखी थी उन्होंने और जो मैप बनाए थे वो हमारे आधार है. उन्होंने मैप बनाया काठमांडू टू लासा. कोई छोटा मोटा काम नहीं था उस समय में. और वो उन्होंने जो मानसरोवर लेक है उसका भी मैप बनाया. कितना पवित्र काम किया. उनको तो अवश्य ही शिव जी का वरदान होगा, नहीं तो नॉर्मल आदमी उस समय ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता, इतना कठिन कार्य नहीं कर सकता. He was a part of this GTS जो मैंने बोला आपको, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे. और जब किशन जी के बारे में बात करते हैं, हमारे पूर्वज, उनको उनके काम से उस समय के जो ओहदेदार थे इतने खुश थे
क्योंकि उन्होंने इतना तगड़ा काम किया कि उनको राय बहादुर की पदवी दी गई, और आमतौर पे तो लोग उनको कृष्णा ही कहते थे, भगवान का नाम ही लेकिन बुला। ये इज्जत रही है भगवान में सर्वेयर्स। हमारी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना भारतीय होने की, वो ये है हमको अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं मालूम। वी डोंट नो व्हाट वी आर। आप इन चारों योद्धा को देखिए, फिर पता लगता है कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है जिंदगी में। किशन जी का जन्म मिलम में हुआ। कहाँ है मिलम? पिथौरागढ़। ये मालूम होना चाहिए हमें सबको। और उन्होंने मानसरोवर, लासा, कासगर, उरुमची, शिंजांग का जो इलाका है वहां पर जो कासगर है, मंगोलिया, इनका एक्सपीडिशन किए उस जगह पर। और इमेजिन कीजिए कब किए उन्होंने, ना हवाई जहाज था, ना हेलीकॉप्टर था, ना गाड़ियां थी, ना मोटरसाइकिल था, पैदल हिम्मत के साथ, प्रभु के आशीर्वाद के साथ। Radhanath Sikdar Ji, he was a great mathematician. उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन होते हैं, जो कैलकुलेशन होती है, उसका आधार हम सबको सिखाया उस समय जब हमको मालूम नहीं था। He was the leader who gave us this art. बहुत बात करते हुए बहुत गर्व सा महसूस कर रहा हूं मैं कि 1852 में 1852 में उन्होंने अपने मैथमेटिकल और सर्वेयर की जो कैपेबिलिटीज के आधार पर कहा, कैलकुलेट किया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 29,002 29,002 फीट है। और उसके बाद में न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट आए, कितनी टेक्निक आई, कितनी मॉडर्नाइजेशन आई, और आज भी हम कहते हैं 29,037 फीट। सिर्फ 35 फीट का फर्क हुआ है। और उन्होंने 1852 में ये कह दिया था। तो अपनी गहराई को पहचानिए प्लीज कि आप किस नस्ल से आते हैं, कैसे हमारे पूर्वज थे। और किंथुप जी, लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि वो सिक्किम से लेप्चा थे, और उन्होंने तिब्बत, सांगपो और ब्रह्मपुत्र का बहुत बारीकी से सर्वे किया। आपको मालूम होना चाहिए कि इन सब कार्य करने के लिए उनको कितनी मुश्किल हुई हो। वो एक मॉन्क बन के गए थे, बुद्धिस्ट मॉन्क। उनको कैप्चर कर लिया, अरेस्ट कर लिया और 3 साल तक गुलाम बना के रखा। फिर वो वहां से निकले, फिर पैदल जो नदी है उसके साथ साथ चलते, जो ब्रह्मपुत्र के इधर में आके एंटर होती है, फिर उस रास्ते से आए। क्या कठिनाइयां सही होंगी उन्होंने, क्या तकलीफें सही होंगी, क्या त्याग, और किस लिए? ताकि हमको एक सर्वे का, हमको इन सब जगह के बारे में एक ज्ञान दे सके। मैं तो तहे दिल प्रभु को एकदम आत्मा से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम पूरे परिवार की तरफ से, कि ऐसे योद्धा हमको दिए सर्वे के इलाके के अंदर। आई एम डीपली टच्ड। ये हमारा पास्ट था, ये हमारी लेगेसी थी, ये हमारा हिस्ट्री थी, ये हमारा धरोहर था, ये हमारा परिवार था, ये हमारे पूर्वज थे। तो आज हमारी जिम्मेवारी क्या है? पहला, तो हम इनको याद करें, पूरी दुनिया को बताएं कि किस प्रकार के हमारे सर्वेयर्स थे। और अगली बात यह है कि हमारे सामने में क्या है, व्हाट विजन मिशन वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। I think today the technology is reformatting so many things. We have to relook. जो theory, practice, collection, application, data है, how to manage this big data, how to get into the data analytics. जो जिस प्रकार सुनील जी ने बताया कि survey grade drones which we are using for our data capture, and what he said about I don't know how to pronounce it, course बोलते हैं ना,
continuously operating reference station network that we got. I think the techniques and the tools that we got for geospatial excellence today is much far superior than it was available with Nain Ji at that time. I think today we are armed with a big information, a big data, and we can foresee the natural calamity, and we need to be prepared for all that. And it will be based on what we inform, so that we can fight with the earthquake, landslide, floods, pandemic, etc. In fact, I personally feel that artificial intelligence has got a great role to assist Survey of India in this present time. Drone, UAV, satellite imagery, space technology. These technology tools and the techniques which are emerging, I think should be able to take Survey of India and capability of every surveyor today to highest level. And that will be the biggest reference to our elders who initially anchored our surveying capability. Today, the technology is providing us a very prudent and achievable capabilities in resolution. 3D, virtual reality, augmented reality. I think this all should be utilized so that we can empower our own self. I feel very happy when I look at the project which Survey of India is undertaking and which is currently in hand and are moving towards excellent shaping for the end effect. Swamitva, large-scale mapping, National Mission for Clean Ganga. I think Survey of India is very fortunate that your excellence, your professionalism is being connected to a pure subject like Ganga Ji. National Hydrological Project. And in fact, Uttarakhand is one place which is blessed with all type of terrains, which has got glacier, high altitude, which has got high Himalaya, mid Himalaya, sub Himalaya, which has got harbor, which has got the biggest hydro blessings of the world, which is also the epicenter of our cultural, our civilizational, and the real history of India. I'm very happy when he said that 6 lakh villages you are trying to look deeply at, and this will be able to take us to the impact of property records, rights of record, and which will be a fundamental change in how we look at the data connected to every Indian and citizen. In fact, you will be able to help in a big way for the environmental sustainability and inclusive socio-economic development. To sum up, I would say that we are walking in, looking at what we are doing, and if I have been able to understand what Survey Journal of India was trying to tell us, that we are walking in for radical change. We are walking in for the transformation. We are walking in for the modernization. All these words, transformation, modernization, radical changes, they are unrestricted, unlimited arena of excellence. I think the way we are walking towards the satellite imagery is going to give us a much higher scale of perspective as far as surveying is concerned. I'm very happy that we are going in for a status where we will have online maps. We'll have scale almost close to virtual reality, but 1:500. In the end, आज बहुत पवित्र दिवस है और आज हमने बहुत एक पावन सा काम किया. We need to, all of us, we need to pat our own self and clap that we decided that we will remember our elders. Let's clap for them. Once again, in the end, I will say, शिव जी ने अपने त्रिशूल से एक सोच दी है कि अपने पास को कभी मत भूलिए. जो एक शिव जी त्रिशूल का एक जंग होती है
वो कहती है अपने पास्ट को कभी मत भूलिए, अपने एल्डर्स को कभी मत भूलिए, जिन्होंने आपको ये ज्ञान, ये गहराई, ये एक्सीलेंस दिया है, उनको कभी मत भूलिए। एंड आई एम वेरी टच्ड दैट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू मेक आवर एल्डर्स known to everybody in the world about the excellence and what they offer. Second is, जो त्रिशूल जी का सबसे बीच वाला होता है, वो बोलता है जाना कहाँ है? जाना हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, रेडिकल चेंज एंड हायर स्केल। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारतवर्ष का जो नेचुरल सेल्फ वर्थ है वो विश्व गुरु का है, और उसके लिए हर एक को वी हैव टू बी इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस बाय बीइंग द बेस्ट इन द एंटायर प्लैनेट, बाय बीइंग द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। और तीसरा है कि ये जो सब होगा ना, जो इस क्षण में, इस मोमेंट में, इस अपॉर्चुनिटी में होगा, वो तभी होगा जब आप टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और टूल्स को पहचानते हैं और उनको अपने लक्ष्य के साथ में मिला सकते हैं। वैसे 10 अप्रैल है, 10 मिनट ही दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जब बात अपने पूर्वजों की होती है तो थोड़ा आदमी भावुक अवश्य होता है। जय हिंद।